Hi, welcome back to another episode of Same पर Different. Guys, I come from a family जहाँ पर सब बहुत बड़े sports fan हैं. If you're a United fan or a Chelsea fan, अगर आप Nadal fan हो या Federer fan हो, all of these decisions have a huge impact on your life. ठीक है, हमारे घर में sides divide हो जाती हैं ऐसी चीज़ों पे. So when you come into such a family, there is no choice but to be a sports person, and that's what happened to me. When I was younger, I was thrown into a bunch of sports. But I started loving basketball and that's what I pursued. And Suvrat के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. He has played so many sports in his entire life and it has benefited the both of us so much. तो आज के एपिसोड में I want to talk about how sports is so important for everybody, especially people with special needs or differently abled people, and how that has boosted our confidence and has brought us so much closer. I feel sports सबके लिए बहुत important है. It's very accessible. And how sports is a big gateway to inclusion. Sports discriminate नहीं करता. It's one of the most important things for social participation. So when we were younger, मुझे याद है कि मुझे बहुत मुश्किल लगता था to introduce my brother to my friends. क्योंकि ना सुव्रत बोल सकता था and I always used to feel a gap in how should make my friends understand what my brother needs, wants, and he does want friends. तो हमारे कम्युनिटी पार्क में हम सब लोग शाम को फुटबॉल खेलते थे एंड दैट इज़ वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज विद हिम. सो इनिशियली आई यूज्ड टू टेक हिम टू द पार्क एवरी डे एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू, बट स्लोली वी स्टार्टेड हिम इंक्लूडिंग इन द फुटबॉल गेम. तो इन एवरी गेम आफ्टर समबडी वुड स्ट्राइक अ गोल, हम सब सुव्रत को 5 kicks देते थे. ही हैड 5 free kicks after every time a goal was scored. And that's the first time Suvrat actually had a friend circle. Every day now people would look forward to Suvrat coming to the park. In fact, this friendship grew over time. These people started going to Suvrat's school sometimes to pick him up. And it was a wonderful experience. I still miss those friends in my childhood house where I used to get together and play every day. I feel वहाँ पे हमने sports का true importance समझा because we realized if we want to integrate Suvrat in the mainstream society, sports is a very good option. In fact, also it doesn't come so easy. Every time we had to teach Suvrat a sport, हमें बहुत creative ways ढूंढने पड़ते थे. To give you an example, Suvrat didn't know how to throw a ball, right? And he had a sensory issue with that. तो हमने बहुत कुछ try किया. How do we get him to throw a ball? It's so simple, right? तो फाइनली हमने क्या रियलाइज किया, ही लव्स द साउंड ऑफ समथिंग ड्रॉपिंग इनटू वाटर. So we filled up a bucket and he used to drop a ball into the bucket, and slowly we moved the bucket away from him and he learned how to throw a ball, and eventually of course the bucket was taken away and he could just throw a ball. But all I'm trying to say is that sometimes we have to be creative in how we learn new things. And that is something that you might have to work out, figure out what works for your child or your sibling. My fondest memories with Suvrat have sports involved in it. Everything else, be it education, daily living skills, वो सब मेरी mom, उसकी teachers ने उसे सिखाए हैं. I've been a part of him learning how to skate, how to swim, how to cycle. And अगर आप उसका medal board देखोगे, he has far more number of awards and prizes than I ever won in my entire life because of sports, or because of anything actually. He also went ahead and went for Special Olympics Games for swimming, which was a huge moment of pride for us in our family. I feel like हमारे family में everybody was so proud and they could finally see Suvrat on a platform excelling at something. But it's not necessary that all sports have to be taken for a competition or have to be taken to a competitive level. मेरा भाई बहुत सारे स्पोर्ट्स सिर्फ फन के लिए करता है, जैसे हम सब करते हैं. सब कुछ एक कंपटीशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स टू साइकिल, बट उसे साइकिलिंग कंपटीशन के लिए जाना नहीं पसंद. आई रिमेंबर ही वेंट फॉर दिस वन कंपटीशन वेयर दे वर मेड टू वेट ऑन द ट्रैक फॉर वेरी लॉन्ग. तो बाय द एंड माई ब्रदर जस्ट गॉट टायर्ड. ही इज लाइक नोप, नॉट डूइंग इट. सो एक्चुअली जब उसकी कंपटीशन का टाइम आया, ही वेंट टू द स्टार्ट लाइन, देन डिसाइडेड उसको नहीं करना. उसने साइकिल वहाँ पे छोड़ा ट्रैक पे एंड ही लेफ्ट. Right, but then we decided not to push him for that because it's just something that he wants to do for leisure. In fact, even swimming, I feel like उसने हमारी सारी holidays, summer और beaches और swimming pools के around plan होती हैं that even if we go once a year, once in 2 years, whenever, he loves to be around water. So it's a fun activity that he really looks forward to. So if it doesn't have speech, he still has an action for swimming ताकि वो हमें बता पाए when he wants to go to swim. So every time he wants to go to swim, he does this. In fact, उसने इतने selective actions सीखे हैं about what he wants to convey to us, and swimming is one of them.
सुव्रत का स्विमिंग स्टाइल भी सबसे अलग है. He doesn't follow any particular stroke, which makes it very hard for us to categorize his style in one way. तो वो किसी competition वगैरह में जब जाता है तो a lot of time there's a restriction for that. That is because when we used to go in the pool, we didn't teach him a proper technique, and now it's very hard for him to unlearn something and learn something new. So my suggestion would be, if you're teaching your child a new sport, it's a good idea to hire a professional. It'll help him learn the proper way to do something new. And in fact, अगर वो possible नहीं है, I feel like any physical activity is still a good activity. I'm also going to introduce you to Suvrat's coach, who has trained him and a lot of his peers who are special needs children. And they have excelled in their own sports, in their own fields, in their own ways. So presenting Rakesh sir to you from Saurum School. He's trained several children who've gone to states level, national level, and even international level competitions. So let's hear from him why sports is important. स्पोर्ट्स बेसिकली सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है या स्पेशल स्टूडेंट है. स्पोर्ट्स दोनों के लिए लाइफ चेंजिंग आप कह सकते हो एक रोल अदा करता है स्पोर्ट्स. उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारी सोसाइटी में जिसको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं, कोच ले लीजिए, स्पोर्ट्स टीचर ले लीजिए, उनका एक माइंडसेट है कि इस बच्चे के साथ बहुत काम करना पड़ता है. और ये ऑब्वियस है भी कि इस बच्चे के साथ आपको एक चीज़ कराने में आपको 6 महीने लग जाते हैं, जबकि वही चीज़ आप रेगुलर बच्चे से 1 महीने में ले सकते हैं. सेकेंड थिंग आती है कि अगर हमें कोई बंदा ऐसा मिल भी जाता है कि जो बच्चों के साथ डेडिकेटली काम करे, बट उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता. लाइक अगर मेरे को ले, अगर मेरे को बच्चे मिलते हैं तो मेरे को वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग कराई जा सके. लाइक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जैसे रेगुलर बच्चे एडमिशन लेते हैं वैसे ही स्पेशल को भी एडमिशन मिलना चाहिए. उसमें ठीक है, कोच अगर रेगुलर कोच हेल्प नहीं कर रहा है तो जैसे हम स्पेशल फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं तो हम वहाँ जाकर उन बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं. मैंने 2004 में स्पेशल ओलंपिक्स एज वॉलंटियर ज्वाइन किया. उसके बाद 2008 में मैंने स्पेशल स्कूल ज्वाइन किया. 2011 मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया एथलेटिक्स में. वहाँ से एक स्टूडेंट मेडल लेके आया, सिल्वर मेडल, जो मेरा ट्रेन किया हुआ था. आफ्टर दैट 2015 में मेरा एक स्टूडेंट स्केटिंग में गया, वो वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आया. 2013 में मेरे इंस्टीट्यूट से 9 स्टूडेंट्स ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया और जो सभी अपने अपनी डिसिप्लिन में मेडल्स जीते. एंड आफ्टर दैट रिसेंटली 2019 हमारे इंस्टीट्यूट से 3 स्टूडेंट्स गए और तीनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जिसमें से 2 मेडल्स लेके आए हैं और एक 4th पोजीशन पे आया, जिसमें से इंडिया ने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था जूडो में, जिसमें हमारा स्टूडेंट 4th था. अब सुव्रत मेरे पास आया, बहुत छोटा सा था. इवन वो स्केट्स जानता था बट वो ट्रैक का कॉन्सेप्ट नहीं था. बेसिकली जैसे मैंने अभी कहा कि स्केट पे चलना ही बहुत नहीं होता, बेसिकली उसको ट्रैक पे लेके आना होता. ट्रैक पे लाने के लिए सुव्रत ने मेरे को बहुत आइडियाज़ और मैंने वो आइडियाज़ यूज़ भी किए. और उसमें फिर मेरे को जो आइडियाज़ मिलते थे उस पर ड्रॉबैक मिलता था, तो मैं उस आइडिया को चेंज कर देता था. तो धीरे धीरे अगर आज आप सुव्रत की वीडियोज़ देखो स्केटिंग करते हुए, ही इज़ डूइंग वेरी गुड स्केट, ही इज़ अ गुड स्केटर. Sports is really important for everybody. It's important for our mental and physical well-being, and these two things can't be separated. It helps us remain calm, it helps us grow as people, and no one can question that. I know for parents for watching of special needs children, बहुत difficult होता है to find the right environment for your children where they can go out and play sports or pursue sports properly. But I urge you to do that because it's very, very important. अगर आपको किसी भी स्पोर्ट या कोई भी टीचर ढूंढने में हेल्प चाहिए, you can log on to our website www.reservoirnow.com, where there are a bunch of sports listed and you'll be able to find the right professionals around you. But also, I urge you to go out to your local parks, community parks, अपने society के playgrounds में जाइए, and I feel like if with a little push, people will come around. And for everybody else watching, प्लीज़ अपने आसपास के स्पेशल नीड्स बच्चों को इंक्लूड कीजिए इन स्पोर्ट्स.
It'll be a great opportunity for them, and you'll get to learn something new. You'll get to learn patience, you'll get to learn how to be more adaptable, and it'll be a lot of fun. I hope you liked this video, and for all those sports fans watching, please help us share this video and spread the word to make India a truly inclusive country. Thank you for watching. I'll be back next week with another episode of Same But Different.